इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इसरो के रोवर प्रज्ञान ने एक और वीडियो जारी किया है। रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग का वीडियो जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसरो ने रोवर प्रज्ञान का पहले एक फोटो जारी किया था, लेकिन अब ये वीडियो आ चुका है। आइए ये वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और
अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't
No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. India's space agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Viewers in the control room erupted into cheers as the landing module touched down. It is the first ever landing on the moon's unexplored South Pole. India's success comes just days after Russia's lunar-25 craft crashed into the moon. In Space Watch now, India becomes the fourth nation to safely land a mission on the moon, joining the ranks of Russia, China, and the United States. The country launched a spacecraft last month, and this morning it landed near the moon's south pole. That's a region that's remained largely unexplored. Yeah, that's really interesting. It's really a new space race, if you will, to put spacecraft down near the South Pole. And the reason is simple. Orbiting spacecraft around the moon have detected the chemical traces of what could be water ice. In other words, ice in these deeply shadowed, permanently shadowed craters right around the pole where the sun never reaches. If that ice is there, then future astronauts might be able to disassemble it, kind of like a high school electrolysis experiment. You get hydrogen, oxygen, you get rocket fuel, air, and water. So there's a real search right now to find out, A, if it's there, B, is it accessible, and what do you do after that? India is a player in that game, as is NASA, and of course China. They're also looking at this. It'll be a total game changer. And part of the reason why there was this space race between India and Russia in particular, as you mentioned, trying to get to that southern pole, led to Russia's really failed mission just a little bit ago. That was Moscow's first lunar mission in actually 47 years. Talk to our viewers about what happened. Was it really due to them pushing themselves too hard to try and beat India? And what does it say about Russia's space program? One small step for lunar exploration, one giant leap for India, as its Chandrayaan-3 spacecraft became the first ever to land near the south pole of the moon. It's not just India's alone. This success belongs to all of humanity. Indeed, India's exploration of the dark side of the moon could lead to major advances. In the coming hours, the Pragyan rover is expected to begin gathering images and data from the South Pole. इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है, जिसके हवाले से बड़ी साइंसी तहकीक कहती है कि वहां पे शायद रिजर्व्स भी हैं पानी के। खैर वो तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। 615 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था चंद्रयान-3 का, पहले फेल हुआ 2019 में चंद्रयान-2। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नताइज आज वो देख रहे हैं। It was called 20 minutes of terror, but India converted that into 20 minutes of success. The Indian Space Research Organization has done what no other country has been able to achieve. It has made a soft landing on the south pole of the moon that is often called the dark side. The Vikram lander has now begun a historic journey to assess the lunar surface. India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The lunar probe Chandrayaan-3 touched down just a short while ago, following weeks of nail-biting anticipation across the nation. Experts say that the success of this mission will solidify India's position in the global space race. It joins only 3 other space agencies that have reached the moon's surface, those of the US, the former Soviet Union, and China. A spacecraft in India has become the first to land on the south pole of the moon. India is the 4th country to land on the moon after the US, the former USSR, and China. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take you inside the control room just before landing. Remember, this was an uncrewed spacecraft, so no one on board, everything controlled from here in the control room. And just to explain what we're going to see, Prime Minister Narendra Modi wasn't there, so he was being beamed in on a screen to watch. Also on the screen was a graphic, computer-generated representation of the lander as it descended. Right, let's now take a moment
it happened. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल. So you can see the cheers, the celebrations. Landing on that part of the moon is no easy task, and you can see there Narendra Modi very happy waving that flag. Let's hear what he said. It's certainly a very proud moment for people here in India as the country created history to be the first one to land on the south pole of the moon and contribute to the global space research with such important aspects. And this is important, and there were scenes of jubilation, people chanting patriotic slogans, hugging, distributing sweets, because it's a moment of joy and a moment of pride for everybody around. It also brings India up on the ladder to be part of the elite club of just 4 countries to have made a soft landing on the moon, and also gives it a credible approach and a credible push to the cost competitive space engineering that India has been doing. Remember, it's just been 3 years that India has opened up the space industry for private players here, because the government wants to make the space economy a larger portion and expand it. And we've already seen the startups coming into this space double in number in just 3 years' time. And that is the kind of interest that's coming in. And when we were talking to enthusiasts, people, especially even young audiences who were here to watch the live screening, they were all talking about the prospects this builds for India to grow in the space economy, to build on from here, and also build more jobs around the space sector for youth coming in. So on a lot of accounts, this is a historic moment for India as well as for the world, and India's contribution into the space research. Yeah, Arjun, a huge achievement landing in this part of the moon, the south, near the South Pole, because it's so much harder to land there than near the equator, as has been done before. But it's not over, is it? People are still watching because the landing has taken place. The next step is the rover rolling out of the lander and on its wheels then going out on a little explore. That's what's coming up next. Yeah, but they've managed to get a lot more. Just going to interrupt because there's. I think they've done it. Oh wow! Applauding. Let us all wait to hear from. So confirmation we're having that it has landed successfully. So an extraordinary moment. India has made history by becoming the first nation to land near the moon's south pole. India now only the 4th country to have achieved a soft landing on the moon as well. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home. Let's take a closer look at why there's been a rise in interest in the moon's southern pole. Well, the area is said to be home to frozen water, which could be a source of drinking water, fuel and oxygen for future moon explorations. But attempts to land on the surface of the moon had proven challenging. That was until now. India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon after the US and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking just a couple of minutes, the Chandrayaan-3 spacecraft landed on the lunar south pole. Look at the celebration here. India's space research organization is already sharing stunning photos from the mission. And look at these pictures of the approach. It's a rare close-up of the moon's kind of dusty gray terrain. This mission comes as space programs around the world are racing to get to the moon. This weekend, you'll remember Russia failed to land a spacecraft on the moon. NASA has announced multiple crewed lunar missions, including plans to have the first woman and person of color on the moon's surface. But India landed on the south pole of the moon, and experts believe there could be ice, mineral deposits, valuable elements there. Our Vedika Su joins us live in New Delhi with more. I can only imagine how excited people are, Vedika. Absolutely. Spontaneously across the length and breadth of the country, because it is a historic moment. It is a moment for all Indians, 1.5 billion Indians to rejoice. Let's listen to some of the reactions coming in. I just want to say that I'm extremely proud of all the India, and also apart from being proud, I'm motivated. I'm motivated towards the ISRO and the space organization. Today is a pleasant moment that we are born in India. We are so pleasant that we are in India because there's no one to
that we've finally made it, we've reached it, we are there, it's a definitive action. The contract has been signed that India will be sitting on the same table as others while negotiating things on the moon. Celebrations happening outside the ISRO office. There were celebrations of millions, and along with it, the people of Bangalore also come out in support of the scientists there, and they celebrate. Today is a monumental and a historic day in the history of India. I'm currently at India Gate, and as you can hear, the josh here, the energy is high. Tiranga on the moon, what more do you want? We've been tracking this journey last 40 days, and we could not wait until today. We finally made it to the moon. Absolutely, and to the South Pole, first country to land near the South Pole of the moon. India creates history. In the Times Now newsroom, the dhols and nagaras are 8 times down. Trust India is truly a brilliant moment, and we're all so elated. जोरदार तालियां खुद के लिए बजा लीजिए। बहुत देश है यहाँ पर, देश के जो युवा है वो भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जोश हाई है 7वें आसमान पर। आज की कामयाबी को देखकर सभी के चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें आज हिंदुस्तान ने कमाल कर दिया। यकीनन जिस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, आज वो शाम जैसे नजदीक आई, उसके बाद दिल की बढ़ी हुई धड़कनों ने जिस तरह से शोर मचाना शुरू किया वो अपने आप में अद्भुत रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसरो की टीम को, वैज्ञानिकों को जबरदस्त तरीके से अपने अलग ही शब्दों में बधाई दी गई। वहाँ भी यही खुशी है और देशभक्ति के गीत पर बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी लोग झूम रहे हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। It is a very proud moment that our country has globally excelled, and like we're very proud of the scientists and overall. टीके का उमंग और ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो आ रही हैं, शहर अलग अलग हों लेकिन लगभग एक जैसा माहौल है पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इसी तरीके की खुशी, इसी तरीके का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। वो मालूम है, एक फिल्म, महज एक फिल्म $165 मिलियन की बनी थी, यानी कि 1350 करोड़ में एक फिल्म, और 600 करोड़ में भारतीयों ने चांद पर फतह हासिल कर ली। इसके मायने क्या होते हैं? चंदा मामा दूर के, प्रधानमंत्री ने कहा अब चंदा मामा टूर के हो जाएंगे, लेकिन भारत की जो ये सॉफ्ट पावर है, अब वो कितनी धमक मचाने वाली है दुनिया में। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ताजा तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। सड़कों पर अब तिरंगा रैली की तरह तिरंगे बाहर निकल आए हैं, देशवासी खुशी मना रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ा, बहुत अद्भुत क्षण है। शायद ये क्षण दोबारा ना मिले, क्योंकि पहली बार है कि हम लोग चांद पर उतरे हैं, चांद पर तिरंगा लहराया है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये चांद हमारा है। आज आजादी के 75 साल के बाद एक क्षण हासिल हुआ है, और इन 75 सालों में अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ भारत ने किया। तो सबसे पहले सेल्फी लेकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की फोटो आएगी अभी कुछ, और आपको बता दें 14 दिन तक यहाँ पर रहकर तरह तरह की जानकारियां चांद के बारे में मिलेगी हमें। लैंडर की रफ्तार जब ये परिक्रमा कर रहा था तो आपको बता दें जहाज की तरह तेज था इसकी गति, जब करीब 6000 प्रति घंटा जिस तरह से एयरप्लेन की रफ्तार होती है, और जब उतरने का समय था तो करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया था। ये हमारे सहयोगी जो हैं पल्लव बागला बता रहे थे। तो आज ये उत्साह का दिन है, ये हम महिला साइंटिस्ट देख सकते हैं पीछे, इसरो के लोग हैं, तमाम आम जनता है जो बहुत खुश है। प्रधानमंत्री का संबोधन सुना आपने, भी देखे कि सारे वैज्ञानिक कितने कंपोजिट थे, कितने खुश थे, और उनमें पूरा एक कॉन्फिडेंस था कि इस बार गड़बड़ नहीं होगी, और इस बार गड़बड़ी नहीं हुई, और सफलतापूर्वक हमारा चंद्रयान चांद पे लैंड कर गया। आपके पास आते रहेंगे। विक्रम लैंडर ने चांद से ये पहली तस्वीर भेज दी है। And I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and
and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. To the Mangalyaan, right? We did have an orbiter that landed over there and actually very successfully on its first trip orbited the Mars, and we have another Mangalyaan being proposed to go over there. कंपनियां जैसे SpaceX हो गई, Blue Origin हो गई, ये जो कंपनियां हैं ये बकायदा स्पेस के कुछ टूर लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ में स्पेस में लोगों को ले जाती है, कुछ समय रखती है, नया एक्सपीरियंस होता है और फिर वो वापस आ जाते हैं। अब चांद पर टूरिज्म के भी दरवाजे खुल गए हैं। देखिए शोभना, आपको बता दूं कि भारतीयों का मनोबल ऐसा है कि उन्होंने मान लिया था आज लैंडिंग होगी, सफल लैंडिंग होगी, और इसलिए चॉकलेट लेकर आए। मुझे भी 2 चॉकलेट मिले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज क्या देखा आपने यहाँ? हमने ये देखा कि आज चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई है। मेरे को तो पहले ही पता था कि लैंडिंग हो जाएगी। ये कितने कॉन्फिडेंट है कि इनको पता था कि लैंडिंग हो जाएगी। सर, हमने देखा आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पर विटनेस किया और ये बहुत ही अलग, हमारे लिए बहुत गर्व की रोवर है ना, विक्रम लैंड है। विक्रम की हेल्थ कंडीशन हमको चेक करना है। इसके बाद the Pragyan rover will come out. Pragyan rover will come out in next maybe a few hours. Sometimes it may take 1 day as well, depending upon the conditions. जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। The communications from the lander to ground station was lost. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon.